NOP थिंग जो वो 3 हफ्ते का जी करवाते हैं। तो समर्स में लम्स, जी जी जुलाई जी में जी बिल्कुल। तो आई गॉट इंट्रोड्यूस टू लम्स और मैंने देखा कि जी ये भी एक जगह है ये भी एक जहाँ पे दुनिया आया है। जा सकता है, ये भी एक दुनिया है। तो उसके बाद जब मैं वापस आया तो मैंने कहा मैंने तो लम्स ही जाना है। तब इकोनॉमिक्स का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि मैंने इकोनॉमिक्स पढ़नी है, जी बस लम्स जाना है। तो मैंने आई अप्लाइड टू SSC, आई अप्लाइड टू SDSB और ऑब्वियसली सोशल साइंसेज में भी अप्लाई किया। एंड आई गॉट इनटू द इकॉन प्रोग्राम, मतलब सोशल साइंसेज में। इकॉन तो फिर साल बाद चूज़ किया, बट आई गॉट इनटू द सोशल साइंसेज प्रोग्राम। पहले साल मैंने I will go to SDSB, but I kind of liked it. I अच्छा was आपने स्टार्ट like, एसटीएसबी में किया था? सॉरी आई एम कटिंग नहीं यू। नहीं, I started with social अच्छा sciences. सही सही। लेकिन सोचा ये था कि मैं SDSB में जाऊंगा, क्योंकि बाहर से आ रहे थे, इतना एक्सपोजर नहीं था, पता नहीं था सही इकोनॉमिक्स क्या होती है। मैंने तो कभी सही इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी। आई केम सही। फ्रॉम लाइक अ साइंस इज प्री math इंजीनियरिंग। अच्छा physics background, yeah. सही सही। And I stood on the dean's list पहले साल में ही, so I had all the chances to switch to SSC or SDSB, जी but I stuck with econ. I kind of liked it, so दैट्स हाँ तब मतलब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मेरा एडमिशन मैंने मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी एसडीएसबी था और दूसरा इकोनॉमिक्स था और मेरा एडमिशन इकोनॉमिक्स में हो गया। और मैं उस हम्म वक्त बाहर मेरा बाहर का ऑलमोस्ट था लेकिन मैं आई फॉर सम रीजन अदर रीजन आई वेंट टू लम्स इंस्टेड ऑफ गोइंग अब्रॉड। और मैं लम्स गया और मेरे पहले साल इकोनॉमिक्स में मैंने पॉल साहब भी पढ़ा और मैंने वो सब मतलब इकॉन 101 मैक्रो माइक्रो प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो प्रिंसिपल मैक्रो पढ़ा। लेकिन मेरे अंदर एक वो गिल्ट था कि यार लम्स का सबसे जबरदस्त सीन तो बिजनेस स्कूल है और एसडीएसबी में जी सूट शूट टाई शाई लगा के जाना होता है तो एसडीएसबी बहुत बेहतर है। एंड माय फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, मेरे 3.3 आया और मैंने एसडीएसबी ट्रांसफर ले लिया। एंड वो दिन है और आज का दिन मैं आज तक रिग्रेट करता हूँ कि मैंने एसीएफ की डिग्री क्यों करी। आई कुड हैव स्टेड इन द गुरवानी स्कूल में पॉल साहब पढ़ता, कंपैरेटिव पॉल पढ़ता, इकॉन के कोर्सेज लेता, अटेंडेंस वैसे भी नहीं होती थी इकॉन के कोर्सेज में। बट दिस इज इंटरेस्टिंग एंड आपने ये डिसीजन लिया क्योंकि आपको उस वक्त ये नहीं था कि यार लोग क्या कहेंगे कि मतलब बाद में क्या एमबीए करना है या जैसे जैसे मैं जब अकाउंटिंग मैं किसी को भी बताता था मैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहा हूँ, कहते यार अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एसडीएसबी से मतलब पीडब्ल्यूसी चले आना, डिलॉयट चले आना। But I opted for something else क्योंकि I kind of followed what I wanted to do and you did the same. Lums absolutely. कैसा था लाइक बिफोर कैसा था? जस्ट टू बी वेरी क्लियर क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने भी 4 साल वहां पे गुजारे, ग्रेजुएट लास्ट ईयर। बट एक चीज, सॉरी आई ग्रेजुएट इन 2020, 2 साल हो गए पैंडेमिक को, सॉरी। बट एक चीज जो हम्म मैंने लम्स में देखी क्योंकि मैं कराची के एक ए लेवल कॉलेज से आ रहा था और जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे पता चला जी 3-4 कराची के ए लेवल कॉलेजेस हैं। एक उनका ग्रुप होता है, एक एचएसएन का होता है, एक लाहौर ग्रामर जेटी का होता है और फिर इस्लामाबाद वाले रूट्स रबेल्स बीकन मरगला कैंपस और वो सारे जो है एक उनका ग्रुप होता है। हम्म नाउ लाइक रिलेटिवली इंट्रोवर्टेड पर्सन लाइक मी, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था पेनिट्रेट करना उस सोशल स्ट्राटा के अंदर। बट समवन हु इज ऑलरेडी फ्रॉम एन एनओपी बैकग्राउंड एंड आई एम श्योर आपके साथ बहुत इंस्टेंसेस हुए होंगे इफ यू लाइक टू शेयर के हाउ हार्ड इट इज क्योंकि जो ये लोग देख रहे हैं और कल को वो एनओपी में अप्लाई करेंगे और कल को लम्स जाना चाहेंगे तो उनके दिमाग में भी होगा यार कि कोई मेरे कपड़ों पे कमेंट कर देगा, कोई मेरे मोबाइल फोन पे कमेंट कर देगा। हाउ डू वी काउंटर दैट इफ यू वुड लाइक टू शेयर? तो पहले तो लेट मी कंप्लीट माय आंसर टू योर हाँ प्रीवियस सही। क्वेश्चन, और सॉरी वो सॉरी। यही था कि मतलब आई वांटेड टू आई चोज माय ओन पाथ एंड माय फैमिली वाज देयर टू सपोर्ट मी। तो मतलब ग्रेजुएशन के बाद भी आई कुड हैव gone to the corporate side, but nahi, I wanted to do policy, even though maybe the corporate side was more lucrative, but I wanted to do that. I went to on a year long thing to LA, and then I came back. तो एजुकेशन का भी यही था कि आई चोज इट एंड माई फैमिली वॉज लाइक सॉर्ट ऑफ ओके, इफ यू चोज दिस देन you must want to do this. Coming back to your second question, there are groups at LUMS, and um, as much as LUMS is diverse, it is also elitist. आपको feel होता है, especially as a national outreach program scholar, कि you do not belong to that social class.
see, there are people coming from HSN, Nixer, KGS, LGS, all those Yeah, rich I'm schools. I'm from Nixer. I can I totally I know, I understand. know. Yeah. And then you're coming from an FSC background, you don't know how to speak English that well. You have a confidence issues participating in class. Just to be clear, I am like personally, I did not have as many of those issues like speaking in class or speaking in English or participating in class. But I know a lot of people who had issues like right till graduation, and that sort of excluded them, right? And it's not just that, it's just the way that you've been brought up to. Um, you've been brought up in a different setup, so you don't necessarily gel naturally into all those groups, right? um, एक financial aspect भी होता है कि okay, you may not be able to go to as many dinners and as many lunches and as many trips as the other people in the group, so you might not be able to be as regular a part of it. But that being said, there are some, like I met some really great people in LUMS from all kinds of places, in all and from all schools as well. So like I have friends from SSC, SDSB, from Karachi, from Lahore. Even though like Jesse hum start में गए in our freshman year, तो we were like एक तो था कि हमारे जो you would have seen कि जो भी हमारे Pashtun boys हैं, they have a very strong bond. We started I do we remember started. I'm sure you've seen the the Atharn weekend thing, right? Atans, right? Like वो जो Yeah, so so weekend we so At we were the pioneers of that trend, right? अच्छा So it's called yeah, Atan, yeah, right? I'm not pronouncing it any like Atan ही बोलते हैं या Atharn bolte hain, I can yes. remember So that. It's like we were the pioneers of that trend, and then it sort of took off, and people started participating. And then there it was not just Pashtuns but everybody, and then it sort of became a lumps phenomenon. So like now, if you don't see, I don't know, like I haven't been to campus like in a couple I of years, but still like see now, those if you in don't see stories में नजर Atharn आ on जाते हैं. campus, yeah, it's just Yeah, not the same weekend, right? yeah. So we sort of made a place for ourselves, and like as much as there was all those things, there was also like genuine friendship, genuine kindness, genuine empathy, and just free flow of ideas. So I can never thank LUMS enough for everything that it has given me, and for playing a part in me being here today. नहीं that is like मैं कल किसी से बात कर रहा था कि लम से पढ़ने के बाद मैंने like I worked in the startup scene in Karachi for like 1.5 year or and along with that freelancing and teaching and a lot of other stuff, but मुझे यहाँ आके यहाँ पे इतने लोग नहीं हैं, but whenever I come across any diaspora person in Germany या मतलब जितना भी यूरोप में आप ट्रैवल कर लो and आप किसी पाकिस्तानी से मिलते हो and you're like वो पूछते हैं आप कहाँ से हो एंड दे लाइक आप मैं जैसे मैं बता देता हूँ मैं लम से हूँ, दे लाइक अच्छा आप लम से, बिकॉज हमें रियलाइज नहीं होता पाकिस्तान में रहते हुए, यू वुड हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, बट पाकिस्तान में लम्स जैसे आई एम फ्रॉम कराची ओरिजिनली, तो कराची हैज दिस अदर इंस्टीट्यूट यू वुड नो आईबीए राइट, तो वो हमेशा से एक था कि आईबीए क्यों नहीं गए, लम्स क्यों चले गए, अपने शहर में रहते हैं और दैट, बट लम्स डज चेंज यू फॉर द ग्रेटर गुड. अगर आपका लम्स का टाइम खोखे पे अकेले बैठ के भी गुजरा है, बट उस टाइम में भी आपकी जो प्रोग्रेस हुई है एज एन इंडिविजुअल, जब हॉस्टल के वार्डन से आपका फटा हुआ होगा या जब आपको लॉन्ड्री वाले ने आपके कपड़े जला दिए होंगे, या मतलब बहुत सारे, हर किसी की अपनी एक माइक्रो रियलिटी थी लम्स के अंदर. एंड यहाँ आके कभी कभी रियलाइज होता है यार कि सिर्फ अंग्रेजी बोलना, when you meet Europeans from Spain, France, Portugal and whenever they are, और उनसे बेहतर आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोल भी सकते हो, लिख भी सकते हो, नॉट टू बी बायस्ड अगेंस्ट एनी अदर लैंग्वेज, बट ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. एंड हमें ये कभी कभी लाइक आपको भी डेफिनेटली लाइक यू लिव्ड इन न्यूयॉर्क, आपको भी डायस्पोरा मिला होगा जो ओरिजिनली न्यूयॉर्क पुराने जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं,
एंड आई नॉट श्योर उनका क्या रिएक्शन होता है, बट मुझे तो थोड़ा वही मिला है कि यार आप लम्स गए थे तो आप तो जी बड़े बर्गर होंगे, और आप तो जी लम्स में तो ये होता है, हालांकि खुद यूरोप में रहते हैं और मुझे कहते हैं कि लम्स में तो बहुत पार्टी होती रहती है. तो खैर that's a different I don't want to talk about that. It's just the perspective that people have Yeah, yeah. about lumps के मतलब वहाँ तो ये ऐसे होता है वैसे वो perspective लोगों का नहीं होगा कि the people all over Pakistan जो top पे हैं उस वक्त who would wanna come to that university because that's the best learning the best seat of learning there is. उसके लिए वो नहीं जाना जाएगा but maybe Exactly. because it's not as conservative as other And campuses in the country तो वो they आपको need to burger listen to समझेंगे. more stories, right? Someone from चारसदा जो कि आज न्यूयॉर्क की टॉप ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ के वापस पाकिस्तान आके, I'm sure you could have ended up in Fulbright from UET से, लेकिन आपको भी पता है कि LUMS was that added, let's say that flame को जो बिल्कुल जो like that the fuel to the fire, right? Because I Fulbright, agree. I agree. It's one thing leads to another, right? So who knows where I would have ended up had I gone to UET? Like maybe I would have not gone on the one exchange, on the other. Maybe I would have not the gotten the undergrad, opportunity. I know a Maybe couple of I people wouldn't who, have the yeah, skills to write my applications and those essays. It's very natural, and one thing leads to another. And I'm a firm believer in the fact that LUMS has played a very significant role in me being where I am today, and you being where you are today, and us being where we are 10 years down the road or 20 years down the road. And it's not like you and me have very different stories, and like there are hundreds of other Luminites who have other stories, who someone ends up in public service, someone ends up in academia, someone ends up in the corporate system, someone ends up in the startup culture. And you know every LUMS alumnus that I've met will say okay, the university played a great role in. definitely. I wanna ask something else, a pattern जो मैंने note करा, because I come from a Punjabi family, but I lived in Karachi all my life. But like 90% of my family lives in Lahore, Faisalabad, Islamabad, and like central Punjab. But I noticed a pattern while I was in LUMS. कि majority of the Pashtun population जो LUMS आती है, they do go for the CSS examinations. मतलब मैंने 28 29 मतलब बैच ऑफ 2012 13 के भी लोगों को लाइब्रेरी में CSS की पढ़ाई करते हुए देखा है. एंड आई डिड अ माइनर इन एक SDSB में एक पब्लिक मैनेजमेंट माइनर होता है, सो आई डिड दैट एज वेल. एंड मेरे साथ आई स्टिल रिमेंबर क्लास में पीछे जो सबसे बैक रो होती थी वो कुछ 6-7 पेशावर और मर्दान और इस तरह के बॉयज होते थे जो माइनर इसलिए कर रहे होते थे क्योंकि उनको वो CSS में हेल्प करेगा. I never wanted to do CSS because I was always that person कि मैं सिस्टम के अंदर नहीं रह सकता to do something. But why, like कभी थॉट आई कि CSS कर, like the fact के 200 में से 20-30 बच्चे तो हर साल लम्जी के होते हैं, तो like did you, क्योंकि you've always been in public service, तो कभी CSS का कीड़ा आया आपके अंदर कि यार CSS कर लेते हैं और एक AP के कोटे पे शायद मतलब हो भी जाएगा and all of that. Like I think आपका हैंग, can you hear me? Yeah. Hold on. Yeah. वो थोड़ी देर के लिए आप हैंग हो गए थे, नॉट श्योर. Okay. So there's always been that pressure भी family की तरफ से पीछे के मतलब CSS करो. And I understand, to be honest, like पाकिस्तान में रहते हुए आपको अंदाज़ा होता है कि मतलब पर्सनली तो आई अंडरस्टैंड कि आपने पब्लिक सर्विस में जाना है या आपने आगे काम करना है, ऑल दैट इज़ गुड. बट वो जो एक प्रेशर होता है फैमिलीज़ की तरफ से कि आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाए और आप अफसर बन जाएं और आपकी पेंशन लग आपके जाए, पीछे सो दैट हूटर यू वाली हैव गाड़ी चल रही हो. एब्सोल्युटली आपके पीछे गार्ड चल रहा हो और सरकारी गाड़ी हो और बहुत सारा कुछ, आपकी एक पेंशन हो, जॉब सिक्योरिटी हो.
I understand all that. मेरी फैमिली में कोई CSP नहीं है, मतलब कोई इस तरह का बिग शॉट ब्यूरोक्रेटिक बंदा, तो इसलिए मेरी फैमिली को और भी ज़्यादा था कि वो तो एक होता है ना, आपको भी होगा कि if someone deems you smart enough to clear the